हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दो ऐसे सेल्फ केयर गैजेट्स दिखाऊंगी जिन्होंने एटलीस्ट मेरी तो पोस्टपार्टम फेज़ में बहुत हेल्प की है। वैसे तो कोई भी इन्हें अपने सेल्फ केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकता है, बट आई डिस्कवर्ड दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स आफ्टर माई प्रेगनेंसी, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मेरे हेयर और स्किन स्पेशली फीट काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस Callus Remover फॉर ड्राई फीट एंड द अदर इज़ अ स्पा कैप, और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज़ किए हैं। So let me first show you the Callous Remover. The brand is Smith and I bought it for 899 rupees. This is a rechargeable gadget, तो इसे आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैंने इसे 7 to 8 टाइम्स यूज़ किया है और इसके बाद ही ये डिस्चार्ज हुआ है। So you can carry it for a trip of whole 1 week. इसमें 3 टाइप के फाइलर अटैचमेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन्स। एक कवर है, क्लीनिंग ब्रश है और एक चार्जिंग केबल है। आपको कौन सा फाइलर यूज़ करना है दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ योर ड्राई फीट। लाइक अगर आपकी हील्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और हार्ड है तो आप मीडियम या लार्ज फाइलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको रेगुलरली यूज़ करना है तो आप स्मॉल ग्रेन साइज़ का फाइलर यूज़ करें। मैंने अभी तक हमेशा ही मीडियम साइज़ का फाइलर यूज़ किया है। जस्ट पुश द स्टार्ट बटन एंड यूज़ इट लाइक अ रोल ऑन। कुछ चीज़ें जो आपको इसको यूज़ करते वक्त ध्यान रखनी है कि एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस स्क्रबिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, और जहाँ पे आपकी हील्स क्रैक्ड है वहाँ पे स्क्रब नहीं करना है। अगर आपके फीट बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि अपनी हील्स को फाइल करने के बाद फुट क्रीम अप्लाई कर लें और थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहन लें। और अगर आप खुद को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं देन फॉलो विद अ नाइस पेडिक्योर। मेरे फीट पहले कभी भी इतना ड्राई नहीं होते थे, पर प्रेगनेंसी के बाद से अ मंथली पेडिक्योर डजंट वर्क एट ऑल फॉर मी। In fact, the hydration that comes from a pedicure doesn't stay even for 2 days. So I use this once a week followed by foot cream and once a month followed by a pedicure. Now that I'm a mom, it's not always possible for me to step out for the pamper sessions I need on regular basis. I have been using these products since a year now and they are working very well for me. In fact, you can even use these products to make a self-care kit and gift it to your loved ones. If you have any queries regarding this product, then tell me in the comment section, and the link to buy this product is mentioned in the description below. Now let's come on to the other product, this hair spa cap. And guys, this is amazing. I mean, Callus Remover यूज़ करके pedicure करने में तो फिर भी थोड़ा effort लगता है, but this gadget, just plug it in and sit and relax. The brand is Querinkle and I bought it for 399 rupees. It has 3 heating modes. इसका inner cover removable है, which makes it easier to clean after every use, and it can also be adjusted to fit every head with this string. The only precaution you need to take is not to use it in the shower.
To start with, just apply any hair oil or any hair mask. Plug in the spark gap, set it to your desired heating mode. I always use medium. Put it on and fix properly with a string. Now just relax for 10 to 15 minutes and after 5 minutes wash your hair with normal water. The heat will help your pores to open up and absorb all the nutrients from the oil or the mask. You will actually feel the difference in the softness of your hair. If you have been using any cool gadgets like these, then please share with us in the comment section and subscribe to stay tuned for many more helpful videos. You can also follow me on Instagram at RovitaS by Nivedita to stay connected with me for a lot more informative randomness like hauls, travel, stay and food recommendations, home decor, DIYs and much more. See you in the next video. Bye!